हरिओम। मैं योगाचार्य राकेश बलूनी आपका अपने योगिस्तम चैनल में स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हिप एंड थाइस एक्सरसाइज के बारे में। तो आपको दोनों लेग को ओपन करना है, 4 फीट अपार्ट पे वीरभद्रासन पोजीशन में आना है और उसके बाद आपको स्ट्रेच करना है लेग को साइड बाय साइड। 1 2 3 नेक बैक स्ट्रेट, 4 5 back leg is straight, 6 7 8 9 and 10 and hold. अब open your chest, roll your shoulder back and start and shake. Thighs को shake करना है up and down. 1 2 3 4 5 6 7 8 and side change. Back leg is straight, open your chest, roll your shoulder back again and start shake. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 again. अब start करेंगे hip and thighs exercise. second step, same, open your feet 4 feet apart, toes press inside 60 degree and start stretching. हिप एंड थाइस को स्ट्रेच करना साइड बाय साइड. 1 2 3 बैक लेग स्ट्रेट, लुक अप. 4 5 6 7 8 9 back leg straight, toes 60 degree inside, roll your thighs and start and shake up and down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and side change again. Back leg is straight, roll your thighs and start and shake. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अब करेंगे लास्ट थर्ड स्टेप हिप एंड थाइस एक्सरसाइज का. लेग को ओपन कर देना है 4 फीट अपार्ट, टोज प्रेस इनसाइड एंड दोनों हैंड्स को मैट में रखते हुए सपोर्ट लेना है और लेग को स्ट्रेच करना साइड बाय साइड. 2 3 4 5 नेक बैक स्ट्रेट, 6 7 8 9 10 11. Hands go straight, finger interlock and fast. Same step. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and hold. Leg straight, toes press inside, lift your arms up and forward and exhale. Hold. 1 2 3 4 and 5. Inhale, lift your arms up and slowly and side change again. Straight your leg, toes press inside, lift your arms up and exhale, then forward. Hold. 1 2 3 4 and 5 and slowly and come back. Lift your arms up and exhale and relax and slowly come back. Sit Vajrasana. Hari Om.